आज जब हर संस्था की निष्ठा पर सवाल उठते हैं तो जस्टिस जोसेफ जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी इस मुल्क में न्याय बिकता नहीं है। ऐसे जजों की सबसे बड़ी ताकत होती है सन्नाटा। वो चिल्लाते नहीं लेकिन उनके फैसले गूंजते हैं। वो कैमरे के सामने नहीं आते लेकिन उनके शब्द संसद तक पहुंचते हैं। जस्टिस जोसेफ ने यही किया। हर बार सरकार को उसकी हद याद दिलाई और जनता को उसका अधिकार। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जज की जो न सत्ता से डरा, न कुर्सी से और न ही किसी राजनीतिक हॉटलाइन से जुड़ा। नाम है जस्टिस के एम जोसेफ। वो जज जिसने कई बार भारत सरकार के सामने आईना रख दिया और कहा, देखिए साहब, ये संविधान है, आपकी पार्टी का घोषणा पत्र नहीं। मतलब सीन सीधा था। अदालत में कानून खड़ा था और सरकार वहां ईगो लेकर पहुंची थी। साल था 2016। उत्तराखंड में सरकार बदलने की कवायद चल रही थी। राज्यपाल ने रिपोर्ट भेजी, यहाँ तो गड़बड़ है जी, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। और केंद्र सरकार बोली, डन। लेकिन तभी जस्टिस जोसेफ ने वो फैसला सुनाया जिसने दिल्ली की गलियों तक सन्नाटा फैला दिया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में बहुमत विधानसभा में साबित होता है, न कि राजभवन या नॉर्थ ब्लॉक में। बस सरकार को ऐसा झटका लगा कि कई महीनों तक कानूनी बहसों में कानून जीतता रहा, राजनीति हारती रही। अब सोचिए, वो कौन सा दौर था जब कोई जज खुलेआम ये कह सके कि आपकी कार्रवाई संवैधानिक नहीं है। जस्टिस जोसेफ ने ऐसा कहा और किया। उत्तराखंड की चुनी हुई सरकार को बहाल किया गया और ये वही केस था जिसने दिखा दिया कि संविधान की किताब अब भी जिंदा है। मतलब जब बाकी सब लोग सत्ता के साथ लाइन में लगे थे तो जोसेफ साहब लाइन से बाहर निकलकर बोले, मैं कानून के साथ हूं। अब यहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि इस फैसले के कुछ ही समय बाद जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए नामित किया गया तो दिल्ली में अचानक फाइलें धीमी पड़ गईं। कहा गया, थोड़ा सोच लेते हैं। मतलब जिसने सरकार को झटका दिया उसकी फाइल में अब ठंडक आ गई। लेकिन जोसेफ ने न तो शिकायत की न नाराजगी जताई। बस एक मुस्कान के साथ बोले, जो संविधान में लिखा है वही मेरा धर्म है। और दोस्तों, यही जज जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो उन्होंने दोबारा सत्ता को उसकी असलियत दिखाई। रफाल मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने सीबीआई को लेकर ऐसा बयान दिया कि सत्ताधारी भी चुप हो गए। उन्होंने कहा, सीबीआई का काम सरकार की उंगली पकड़कर चलना नहीं है, बल्कि कानून के रास्ते पर बिना डर के चलना है। अब सोचिए, ये बात उस दौर में कही गई जब जांच एजेंसियों की नीयत पर सवाल उठ रहे थे। किसी और जज ने शायद सोचा भी नहीं होता, लेकिन जोसेफ ने बोल दिया, साफ और सीधा। जस्टिस जोसेफ का एक और चर्चित फैसला आया मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी की नियुक्ति पर। उन्होंने कहा कि सीईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री अकेले नहीं करेंगे, बल्कि उसमें सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष की भी भूमिका होगी। मतलब चुनाव आयोग सरकार का नहीं, संविधान का हिस्सा है। और इस फैसले ने तो चुनावी गलियारों में हलचल मचा दी, क्योंकि जोसेफ ने वहां भी वही काम किया, सरकार को आईना दिखाया। अब देखिए व्यंग्य का कमाल, जब कोई सत्ता में होता है तो उसे लगता है अदालतें उसकी मुट्ठी में है, लेकिन जब ऐसा जज सामने आता है तो वही लोग कहते हैं ये तो एक्टिविज्म है। असल में ये एक्टिविज्म नहीं, ये जिस्म वैधानिक ईमानदारी है। जोसेफ ने बार बार साबित किया कि जज की कुर्सी किसी पार्टी ऑफिस का एक्सटेंशन नहीं होती। वो कोर्ट में बैठते हैं संविधान की आत्मा बनकर, न कि सत्ता के सलाहकार बनकर। उनकी बातों में एक बात हमेशा साफ रही, लोकतंत्र में सत्ता बदलती रहती है लेकिन संविधान हमेशा रहता है। उन्होंने न कभी आरएसएस के लिए बोला, न बीजेपी के लिए, न कांग्रेस के लिए। उनकी भाषा हमेशा सिर्फ संविधान की थी और यही बात उन्हें अलग बनाती है। आज जब हर संस्था की निष्ठा पर सवाल उठते हैं तो जस्टिस जोसेफ जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी इस मुल्क में न्याय बिकता नहीं है। ऐसे जजों की सबसे बड़ी ताकत होती है सन्नाटा। वो चिल्लाते नहीं लेकिन उनके फैसले गूंजते हैं। वो कैमरे के सामने नहीं आते लेकिन उनके शब्द संसद तक पहुंचते हैं। जस्टिस जोसेफ ने यही किया। हर बार सरकार को उसकी हद याद दिलाई और जनता को उसका अधिकार। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि सिस्टम बदल नहीं सकता तो उसे ये कहानी सुनाना, एक ऐसा जज था जिसने कहा, सिस्टम बदलेगा नहीं, सुधरेगा। और वो सुधार संविधान की किताब से शुरू हुआ। जस्टिस के एम जोसेफ की एक कहानी सिर्फ एक जज की नहीं, बल्कि एक उम्मीद की कहानी है कि अगर एक आदमी भी ईमानदार हो तो पूरा तंत्र हिल सकता है। तंत्र हिल। My Lord, the Chief Justice, Justice Massey and Justice Oak, my Lord. The first thing which comes to our mind when we think about Justice Oak is a tireless judge, my Lord, a workaholic who has never, my Lord, been seen ill-prepared. And in fact, my Lord, the problem was the Lordships were more prepared than us, my Lord. And this is a genuine right-handed compliment, my Lord. Your Lordships have always read everything. Lord, the most amazing thing, my Lord, which I personally find amazing is
that despite, my lord, such an irreparable loss yesterday, your lordships put duty first, duty as a judge first. Otherwise, my lord, your lordships had an option of delivering judgments virtually also. But, my lord, this is what, my lord, which all of us will have to learn to put duty first. Lord, I am not here, my lord, to advise your lordships, my lord, but I'll take the opportunity. Please spare more time for the family. The work schedule you must have followed must be such that your family also may take time to adjust with your continuous presence, because you must always been in your chamber working for the matters. But this is their rightful claim, and don't close any options. Your lordship's services are required, my lords. I wish your lordships a very good health and a very good second career of your lordship's choice. And third career. third career, my lord. I stand corrected, my lords. I stand corrected. And though your lordships may not believe in God, but I am a believer, my lord, I pray that may God always be by your side. Thank you. My lord, one more thing. Your lordships would also be remembered as a judge who took stand when it was required, my lords. In fact, my lord, me and Raju were almost in every case, my lord, on the wrong side of your lordship's judgment. At the receiving end. At the receiving end. But, my lord, as I have said, that our respect and love for a judge can never depend upon the relief which we got or we did not get. Lord, thank you for being what you are. Thank you. May I, Lord, on behalf of the entire Lord Bar Association, first of all, Lord, offer our very, Lord, heartfelt condolences for this very tragic thing which has happened, Lord, to your lordships yesterday. It is your lordships, Lord, sense of duty, which is the reason why your lordships are here today. Your lordship's commitment to the cause of justice is exhibited by the fact that you went for the cremation and came back here today to be with us for your delivering your judgments, and also, Lord, to be with us for this, giving us this occasion, Lord, to speak about your lordship's career. Lord, it is a matter which I can say on behalf of all the members of the bar that we never felt that any face matters before your lordships. We never felt, Lord, that if there was a point involved in the matter, you will not get relief. We went back many times even without getting a relief, but we never ever felt that that justice has not been done, Lord. So Lord, I'll reserve the rest for the evening, Lord, but I, Lord, very, Lord, sincerely hope that your lordships have a very, Lord, meaningful third tenure. Of course, your lordship will miss your lordship's mother, because that is something which I thought your lordship would have cherished after retirement. But that is not God's will. Nobody can, Lord, change that. But I'm sure, Lord, your lordship's health, the rest of your life will be very healthy, meaningful, and as, Lord, fruitful as your lordships have been so far to the institution. Chief Justice, this is Masi, this is Hoke. The first name of my lords and the third name of my lords has already been widely known. It is the middle name of Srinivasa. Lordship's name had the Lord itself. You were a born judge, and throughout your life you have dispensed divine justice. Without any favor, without any ill will, true to your oath. And when in this moment of your extreme personal grief, you have come for the call of duty, on behalf of our association and members, we wish you well, always. My Lord, first of all, our deepest condolences. What can I say? When some judge leaves, such a vacuum is created that he can never be replaced. That's what I feel today. You know, the Constitution of India has had a vision of certain socio-economic goals. And we in the country and the institutions of the country had to work together to realize those goals. But ultimately, the thematic thread that runs through our Constitution is liberty.
That's the thematic thread, because the history of civilization is a history of strangulating liberty. Empires have been lost because they strangulated liberty. Slavery vanished because it strangulated liberty. Dominance of cultures, dominance of states. If they wished to strangle liberty, people rose. And therefore, a judge will be remembered only, and those are the judges in this court who will be remembered, when the cause of liberty is served through this institution. Which is why we remember Justice Khanna, which is why we remember how ADM Jabalpur was bad, which is why we remember Keshav Nand Bharti, which is why we remember Patanjali Shastri's judgments. Why? Because the thematic thread of liberty was protected by this court. And you symbolize that. You protected liberty like none else did in this court. And I remember the words of Patrick Henry in the Revolution, in the American Revolution, when he said, "Give me liberty or give me death." And John Donne, the famous poet, said, "Give me liberty, for were paradise my prison, I would love to leap the crystal walls." You have leapt that crystal wall that enslaved people in this country, and we salute you for it. Thank you for being what you are and what you were. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।